हेलो वेलकम गाइज, फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा एक 4440 बोर्ड को कैसे एक फ्रेम में इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह से इसको एम्पलीफायर बनाया जाता है, वो एक टाइम लैप्स वीडियो में यानी एक फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसका जो पार्ट 1 है, जिसमें मैं इस वाली बोर्ड का पूरा वायरिंग के बारे में डिस्कस किया, वो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए मेन वीडियो में चलते हैं। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, जो यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इस वाले बोर्ड का जो पावर इनपुट का सेक्शन है, यहाँ पे देखिए एक डायोड बना हुआ है, और अगर आप किसी दूसरा एम्पलीफायर बोर्ड को देखेंगे तो वहाँ पे आपको मोस्टली 4 डायोड देखने को मिलता है। तो 4 डायोड का फ़ायदा क्या है और एक डायोड का क्या नुकसान है? 4 डायोड में जो होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का AC लाइन आ रहा है उसको ये पूरा का पूरा AC को DC करता है, और ट्रांसफार्मर का जितना पावर उतना ही पावर ये DC में जनरेट करता है। लेकिन सिंगल डायोड रेक्टिफायर में क्या होता है, सिंगल डायोड से AC पूरा का पूरा नहीं जा पाता है, AC का हाफ वेव ब्लॉक हो जाता है। तो वहाँ पे डायोड के उस पर आपको हाफ वेव ही मिलता है। तो यहाँ पे हाफ वेव मिलने के कारण आपका जो ट्रांसफार्मर का पावर, उसका हाफ यहाँ पे DC में कन्वर्ट होती है। उसके बाद वो जो हाफ पावर वो IC को मिलता है, वो आपका साउंड क्वालिटी देता है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का जो फुल पावर वो आपका बोर्ड यूज नहीं कर पाता है। और गाइस, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल एक अलग से ब्रिज रेक्टिफायर बनाना होगा, और जो आपका ट्रांसफार्मर का AC पावर उसको पहले ब्रिज रेक्टिफायर में चला के DC करना होगा, और उस वाले DC को आपको इस बोर्ड में देना होगा। ओके, तो वो जो सिंगल डायोड लगा हुआ है वो DC को ब्लॉक नहीं करेगा, तो वो फुल पावर को उधर में ट्रांसफर करेगा और IC को फुल पावर मिलेगी, तो आपका आउटपुट में फुल पावर मिलेगी। तो आप इस वाले डायग्राम को देख के एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लीजिए। इस वाली वीडियो में मैं वो वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ट्रांसफार्मर के लिए एम्पलीफायर नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एम्पलीफायर बैटरी से चलेगा, तो इसलिए उस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। तो आपको बोल दिया हो, आप सर्किट डायग्राम देख के ऐसा कनेक्शन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। तो आइए हम टाइम लैप्स शुरू कर देते हैं। Die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under
Palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल का कुछ वीडियोस देखिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना। अगर आपको मुझसे कोई चैट या बात करना है तो हमारा फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, fb.me/freecircuitlab। वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे जाके फ्री सर्किट लैब का जो फेसबुक पेज उसको लाइक मार देना, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ पोस्ट डालता हूँ तो वो वाला पोस्ट आप देख पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।